Hello students, in previous video we have started Unit 13 and that is simple interest, and we have learned four new words, that is principal, time, interest and rate of interest. So let us revise them. So what is principal? Money deposited or put in a bank is called principal. सो प्रिंसिपल जो भी हम मनी या तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या हम लोन लेते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल, मेन अमाउंट. आफ्टर दैट टाइम. टाइम इज द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन इज कॉल्ड टाइम. तो बैंक में हमने डिपॉजिट किया मनी, दैट इज प्रिंसिपल. अब उस मनी को हम बैंक में कितने टाइम तक रखते हैं, और या कह सकते हैं कि आप कितने टाइम के बाद विड्रॉन मीन्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम. तो ड्यूरेशन, जितने देर के लिए दिन टाइम के लिए वो बैंक में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम. नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट. जब हम बैंक में कोई मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा मनी देता है. सपोज वी हैव डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एंड हम उसको 1 ईयर के बाद निकाल रहे हैं, तो मे बी बैंक हमको 100 रुपीज और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी दे दे. सो वी विल गेट 1100 रुपीज. सो दैट इज एक्स्ट्रा मनी जो बैंक हमें दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. सो द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी ₹100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो एवरी 100 रुपीज पे बैंक हमें कितना एक्स्ट्रा मनी दे रहा है आफ्टर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. So these are the new terms that we have learned in our previous video, and then we have discussed the worksheet 1, and now the simple interest, how we can calculate the interest or simple interest. So we have learned 4 terms, new terms, that is principal, time, interest and rate of interest. So out of these 4 हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट है. सो फॉर दैट हमें क्या है, जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है अपॉन 3 फैक्टर्स, दैट इज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. जो बचे हुए 3 फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन कैलकुलेट this simple interest. Now, so we have a simple formula to find the simple interest, that is principal is equal to simple interest is equal to principal multiplied by rate of interest multiplied by time, or in short SI. SI stands for simple interest, P stands for principal, R for rate of interest and T for time. So SI is equal to P into R into T. So this is the formula that you have to learn, and the whole chapter based on this formula only. So let us try to understand how we can calculate the simple interest by using this formula. So we'll write the formula first. So simple interest, SI stands for simple interest, is equal to P for principal multiplied by rate of interest multiplied by time. So this is the formula, ये आपको learn करना है. So now we will learn how to calculate the simple interest by solving some problems. So here is question number 1 of worksheet number 2. Find the simple interest at the end of 1 year. क्या फाइंड करना है हमें? सिंपल इंटरेस्ट. वी हैव जस्ट लर्न द फॉर्मूला टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू R इंटू T. सो वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, दैट मीन्स टाइम इज गिवन. कितना टाइम हमको गिवन है? दैट इज 1 ईयर. हियर द टाइम इज गिवन 1 ईयर फॉर द फॉलोइंग. सो फॉर ऑल दीज 4 प्रॉब्लम्स A, B, C and D, द टाइम इज 1 ईयर. यहां पर ही हमको स्टार्टिंग में दे दिया है द एंड ऑफ 1 ईयर, दैट मीन्स 1 ईयर इज द टाइम
जिसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. एंड द फर्स्ट पार्ट इज ₹400. सो दिस इज द प्रिंसिपल जिसपे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट 5%. सो व्हाट इज 5%? परसेंट में हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ₹400 at 5% interest per annum. Now per annum means annually. Annually means yearly. पर हर एक साल. Per annum means every year. जो yearly interest है ये हमारा, तो per annum means annually. So ₹400 पे 5 principal, 5% rate of interest, and time is already given 1 year. So let us solve this question. Question number 1 is find the simple interest. Find the simple interest at the end of 1 year for the following. So A part, ₹400 at 5% interest per annum. So let us try to understand how we can find out the simple interest. So here the principal is given. Principal is given, that is equal to ₹400, right? Rate of interest that is equal to 5% per annum. Per annum मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, P for per and annum, that is annually, and time is 1 year. Here time is already given 1 year, right? So what is the formula to find the simple interest? Simple interest is equal to P multiplied by R multiplied by T, that is principal multiplied by rate of interest multiplied by time, that we have learned. This is the formula, right, that we have learned to calculate the simple interest. Now let us put the values of principal, rate of interest and time in this formula. So what is P? Principal is ₹400, right? And your rate of interest is 5% per annum, right? And multiplied by time is 1 year, right? So solve it. So how we can solve it? What we have to do, हमें क्या है, ये परसेंट जो है इसको हमें रिमूव करना है. So remove it. 400 multiplied by 5% को हम रिमूव करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है? नीचे 100 आ जाता है, and multiplied by 1. Now solve it. So it's up to you how you can solve. Either first of all multiply all the numerators and all the denominators and then divide it, or आप यहीं पर पहले कट कर लीजिए फिर सॉल्व कीजिए. According to me, यहीं पर आपको पहले कट करके फिर सॉल्व करें, that will be much easier. So यहाँ पर हम 2 zeros कट करेंगे, 1 2, और यहाँ पर भी 2 zeros, right? So ये कट हो गया. नीचे क्या बचा? Only 1, and ऊपर क्या बचा? 5 4s are 20 and 21s are 20. So ₹20 is the simple interest. Very easy. कुछ नहीं किया हमने, just we have substituted the values or put the values of principal, rate of interest and time in the formula and solve it. We will get the simple interest. Now B part, that is ₹1,800 at 12% per annum interest per annum. I am writing in short PA per annum. ये per annum का PA लिख दिया है. Now you know principal is equal to ₹1,800 and rate of interest. Now again अब मैं ये short में ही लिखूंगा, principal को P लिखूंगा मैं, rate of interest को R and time को T.
Rate of interest is 12% per annum and time is 1 year. So ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आपको ये शॉर्ट में लिखेंगे जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है. एग्जाम्स में भी आप ऐसे ही लैंग्वेज यूज करेंगे PRT वाली, सो जिससे हमारा टाइम सेव होता है एंड प्रॉब्लम या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है. नाउ अगेन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P multiplied by R multiplied by T. That is the formula. Put the values in it. Put the values. What is principal? 1800 rupees 1800 multiplied by 12%. So मैं इसको शॉर्ट में 12/100 लिख देता हूँ डायरेक्टली. आप इसको सॉल्व करते हुए आप इसको डायरेक्टली परसेंट को रिमूव करके नीचे लिख दीजिए या फिर आप परसेंट लिखिए, दैट इज अप टू यू. एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप, परसेंट लगा के नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 100 करें या डायरेक्टली यहाँ पर कर लीजिए. 1 ईयर. सॉल्व इट. सो इसको सॉल्व करेंगे. 2 zeros हमारी कट हो गई. डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बचा? 1 एंड न्यूमरेटर में 18 मल्टीप्लाइड बाय 12. सो दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 216. If you want to multiply, then you can multiply in rough side. 18 multiplied by 12, so it was 16, 3 and 6, 216. So rupees 216. So this is the simple interest. So simple interest is equal to 216 rupees. So this is the answer. Now the next one, C part, that is rupees 2500 at 4.5% per annum interest. This is rate of interest per annum. Now solve it. Principal is rupees 2500. Rate of interest is 4 and 1 by 2%. That is 4 to the 8 plus 1, 9/2% per annum. So you know, whenever the question is given in mixed form, we have to convert it into improper fraction, right? So ये स्टेप आपको हमेशा पता होना चाहिए. जब भी मिक्स फॉर्म में होगा आपने किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में. And time, you know, 1 year is already given in the question. So simple interest, find out. P multiplied by rate of interest multiplied by time. Solve it. Principal is yours rupees 2500 multiplied by 9/2 and percent का हम लोग क्या लगा लेंगे? multiplied by 100. जो परसेंट है इसका 100 multiplied by 1, right? Solve it. 2 zeros को हम कट कर लेंगे एंड यहाँ पर अब कुछ कट नहीं होता है. 2 के टेबल में ना तो 25 आता है ना ही 9 आता है, राइट? सो सॉल्व इट. सो 9 225 नाउ डिवाइडेड बाय 2. सो इसको हम क्या करेंगे? अब इधर इसको हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर मैक्स फॉर्म में. सो अगर हम इसको डेसिमल की तो इसको डिवाइड कर लीजिए अगर आपको डिवाइड करना है. सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, राइट? नेक्स्ट 2 2s are 4, 1. अब क्या है हमारे पास? आपने डेसिमल यूनिट में किया है, 1 है. हम यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है. हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा के 0 and 2 5s are 10. So what is the answer? Rupees 112.50 paise. 112 rupees 50 paise. So this is the simple interest. And now the last D part. In this, rupees 3200 at 6 and 1 by 2% interest per annum. Principal is rupees 3200. Your rate of interest is 6 and 1 by 2%. That is 13/2% per annum.
So there's 6 to the 12 plus 1 13/2 मिक्स फॉर्म को improper fraction फॉर्म में कन्वर्ट किया and time is your 1 year. Solve it. Simple interest is equal to P multiplied by R multiplied by T. Principal is your rupees 3,200 multiplied by 13/2 और ये परसेंट रिमूव किया इसका 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर. अगर यहाँ पर सपोज ड्यूरेशन आपके जो टाइम है दैट इज 2 ईयर, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है. 3 ईयर्स है तो 3 लिखना है, बट यहाँ पर 1 है इसलिए हम 1 लिख रहे हैं. नाउ सॉल्व इट. कट किया है हमने. नाउ और कुछ कट होता है. यस, 2 एंड 32. तो 2 के टेबल में 32 आता है. So 2 1s are 2 and 2 16s are 32, right? Now 16 multiplied by 13. So what is left is 16 multiplied by 13. Solve it. 16 multiplied by 13. So it is 48 and 16. So 208, right? So rupees 208 is the simple interest. Because डिनोमिनेटर में 1 है, so there is no need to write 1. यहाँ पर 2 था डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने 2 लिख के फिर डिवाइड किया, बट यहाँ पर 1 है, so there is no need to write. So in this way we can easily find out the simple interest by multiplying principal, rate of interest and time. Now the next question is question number 2 that we have to do in the book only. इसको आप नोटबुक में भी पहले सॉल्व कर सकते हैं and then you can do it. So here the rate of principal, rate of interest and time is given, and we have to find out the simple interest. So you know the formula. You have to solve P multiplied by rate of interest multiplied by time. तो simply solve it. 20 से 20 कट हो जाएगी, right? और यहाँ पर ये 2 zeros कट हो गई. 2 zeros इसकी और 2 zeros इसकी. 100 6 the 600 and then solve it. You will get the answer. That is 7 6 the 42 and 42 2 the 84 rupees. Right? Very easy. In this way you can solve this problems. So here again principal, rate of interest, time. So principal is rupees 500 multiplied by convert this into a proper form. So it is 17/2%. So 17/2 into 100 multiplied by time is 2 years. Solve it, you will get the answer. Now solve it. 2 zeros cut हो जाएगी. Now 2 से 2 cut हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 1s are 2, and now 17 5s are. So it's 85 rupees, right? Next is 3,000, rate of interest 12%, and time is 3 and 1/2 years. So that is, convert this into this improper form. So 7/2 years. 7/2 years. So now substitute the values. 3,000 multiplied by rate of interest 12/100, then multiplied by what is time? 7/2 years. Solve it. 2 zeros cut हो जाएगी हमारी, right? And then 2 से 12 cut हो जाएगा. 2 6 are 12, and then solve it. 7 6 are 42, and 42 3s are, that is 1,260 rupees. Next is again same way, we have to convert this into improper form and then solve it by putting the values in the formula, that is simple interest is equal to principal into multiplied by rate of interest multiplied by time, and find the answer. So try to do it yourself. In next video we will discuss the third question of this worksheet. Thank you.